welcome. You're watching the Newshour Agenda, India's most loved primetime show at 10. I'm Padmaja Joshi. It's happened again. Nitish Kumar changed his mind again and returned to the RJD. The same party who he, by the way, had branded the torchbearer of Jungle Raj just a few months ago. Anyway, it is still unclear why the JDU leader decided to take this step, because when he was asked this specific question today, he gave no clear answers. Why did he break the alliance? Why is he angry with the BJP? Why did he feel betrayed? The answers remain a little fuzzy. His now alliance partner, Tejasvi Yadav, though, pitched it as, you guessed it right, an effort to stop the dictatorial and anti-democratic juggernaut, the BJP. सात पार्टियां एक साथ आप समझ लीजिए कि लोकसभा में 164 इंडिपेंडेंट एक से 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर दिया और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिक जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, आज बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। Although there are theories aplenty about what could have possibly upset Nitish Kumar enough for him to walk out on this alliance, the most often touted theory is the inclusion of one-time close Nitish aide RCP Singh in the union cabinet, allegedly without Nitish Kumar's approval. Then there have been public disagreements on issues like prohibition and the caste census. Under the surface, though, many speak of how Nitish Kumar's real bugbear was the feeling that he is not being given the kind of respect that he once commanded in the BJP at the time of Atal Bihari Vajpayee, and the nagging fear that sooner rather than later an expansionist BJP will slowly chip away at his party little by little. The BJP, though, sees in it only one reason: greed and lust for power. 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जस्टिफाई करेंगे ये हमारे समझ में नहीं आती है बात। ये ऐसे पार्टी के साथ जाना जिसको कि इन्होंने कई बार कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये जिसको कई बार इन्होंने कहा कि ये साहब बिहार को डुबा दिया, ये इस पार्टी ने पुनः पहले उस पार्टी में गए, उसको छोड़ करके आए हम लोग, फिर जा रहे हैं वापस। माननीय नीतीश कुमार जी संपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे और आज फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए। यह कतई उचित नहीं है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था 2020 में, उस मैंडेट के साथ धोखा हुआ है। यह एक नैतिक लड़ाई है। इस नैतिक लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ मिलकर लड़ेगी। So is this Mahatwakansha ambition? Is that the real reason for the split?
One can't entirely discount the possibility given the glee and happiness this split seemed to spark in the anti-BJP bloc. It's almost as if a Goliath had been felled, and now the Congress, Samajwadi Party, RJD, all of them hailed it as a sign of how this is a booster dose for 2024. आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। नहीं, मैं मानता हूं कि वो काबिल आदमी है, तो यदि सारे अपोजिशन के सहमति से वो बनते हैं तो सबसे काबिल आदमी है वो। तो लोग मांग कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, on News Hour Direct, let's go straight across to former Union Minister Ravi Shankar Prasad. Ravi Shankar ji, why do you think Nitish Kumar has walked out today? What in your mind is the one reason? Ravi Shankar ji, what do you think is the one reason that Nitish ji has broken the alliance with you? Well, you don't ask me this question, ask him. In 2020, his party got 45, 46 seats or 47 seats. BJP has nearly doubled. Nitish ji ensured, Narendra Modi ji ensured he becomes the chief minister again. We won Bihar because of the campaign by Narendra Modi ji. His appeal has diminished. In 2019, he won the Lok Sabha, good number, his party along with us, happy because of campaign by Narendra Modi ji. तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आप जीतेंगे और 2 साल में छोड़ देंगे. This is a downright insult of the mandate of the people of Bihar. Apart from regressing Bihar again into lawlessness, corruption and khawf, which is a byword along with RJD. You all know it very well. Therefore, again I am asking this question. You were bitterly opposed to Narendra Modi ji. You asked in 2017 questions because Mr. Tejasvi was not able to explain the repeated insinuations and serious allegations of corruption in Bharti into railways. You know it very well. Land for appointment, hotel sale of railways in Ranchi, and mall construction. He refused to reply. You walked out. Good. Again today you are going. Therefore you refuse to accept the mandate, take political benefit out of the leadership of Narendra Modi ji in Lok Sabha and Vidhan Sabha again. Is it fair? In 2005 the BJP made him the leader, as I said in my press conference. Late George Fernandez and others in the JDU were not comfortable. But late Pramod Mahajan, late Sushma Swaraj, late Arun Jaitley, all of us, we persuaded our leaders that we need to have a face. And ultimately Nitish became the face. The chief minister did well with BJP. Then again, because of Narendra Modi, you walked out. Then you came in. Then this whole Nitish Kumar politics of walking in and walking out. I'm sorry, this has really been a very sad moment for my state, Bihar. And we shall firmly reply to it in 24 Lok Sabha and also in 25 Vidhan Sabha. The people of Bihar will reply. Let me quickly draw the attention of our viewers to the statistics that Ravi Shankar Prasad was talking about. The number of seats contested by the BJP was less than the number which was contested by the JDU, yet they ended up winning 74 as compared to the 43 of the JDU, yet Nitish Kumar was made the chief minister. Now many people would ask you why? Why, Ravi Shankar ji? Do you think you made a mistake? You earlier spoke of your experience at the time of George Fernandez, and now again, somebody who had done business with the RJD, why did you agree to make him the chief minister?
because Mr. Nitish Kumar came to us that I have fought on the issue of corruption. We said welcome. We trust our allies. And Padmaja, just for the sake of viewers, why did Nitish Kumar leave Lalu Prasad in 90s? When we were fighting the fodder scam case, you remember I was a lawyer in Patna High Court seeking a CBI inquiry in the fodder scam, leading to Lalu Prasad and the whole people going to jail. Then in Samta Party he came with us in the fight against Lalu Prasad. From 90s, became the role minister. We protected him chief minister in 2000 also. Became the agriculture minister. Then CM again in 2005. तो आपको बीजेपी के साथ सत्ता भोगने में आनंद आता है और फिर एकाएक चल देते हैं आप. तो अगर आपको इतनी परेशानी थी तो 2020 में नहीं बनते मुख्यमंत्री अगेन. एंड रिमेंबर पद्मजा, काइंडली सी योर ओल्ड फुटेज. देयर वाज अ विक्ट्री सेलिब्रेशन इन द वेक ऑफ बिहार BJP and NDA victory, where Narendra Modi ji, while addressing the crowd, announced that Nitish Kumar will be the chief minister again. At that time, because you mentioned it, I was in Patna, Ravi. And a lot of your cadre felt कि अगर आपकी 75 सीटें आई हैं, तो आपका CM होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी. क्या आपको लगता है in hindsight there was a mistake? Or was it because you did not have a strong inner leadership caste combination को देख के? आप एक बात साफ जान लीजिए, एक बार हमारे नेता प्रधानमंत्री जी ने फैसला कर दिया तो हम लोगों ने मान लिया, कोई सवाल नहीं. क्योंकि जो जीत हुई थी, और आपको आई वांट टू रिमाइंड यू एंड योर व्यूअर्स ऑल ओवर द कंट्री, इन 20 विधानसभा इलेक्शन there was a 5-phase polls. Since you had the experience of Bihar at that point in time, in the first phase there was voting from the outskirts of Patna till the UP border. We won hardly 3-4 seats in the entire large geography of that area. Rest all opposition won. Then Narendra Modi comes, start effective campaigning. You remember Jangal Raj ke do Yuvraj? You have forgotten that? In the second phase, in the third phase, in the fourth phase, and the fifth phase. And the NDA's numbers started going up and up. The people trusted that we need double engine government. That's how we won. How he wins. Today he has got 16 MP in Lok Sabha in 2019 elections. Ask any of those MP कि आप नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं, नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं. तो ये तो हकीकत है ना. Therefore, again I am asking, again he is going with Tejasvi Yadav. All those questions of corruption, of the railway bharti scam, of the hotel railway sale scam, of the mall scam and the CBI inquiry, all have become irrelevant now. Recently, a Rajdar Bhola Yadav have been arrested by the CBI. That troubles me. Nitish Kumar ji, you are known for some degree of propriety and political integrity. Where is that? क्या आपने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की? अच्छा, हमको एक चीज बता दीजिए आप. जदयू को हम अपने जिनसे हम रिश्ते रखते हैं तोड़ते नहीं है ना. अभी तो मैंने आपको 20-25 साल का इतिहास बताया कि नहीं बताया. तो रिश्ते तो थे उनसे हमारे. और नरेंद्र मोदी जी को याद करिए, नीतीश कुमार ने बिहार में आने से बैन किया था. उन्होंने कहा यह कैंपेन नहीं करेंगे और नरेंद्र मोदी नेता बनेंगे तो मैं एनडीए से वॉकआउट कर जाऊंगा. वो चले गए थे 13 में, आप याद होगा आपको. और देखिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी का बड़ा हृदय कि 20 में उनको 43 सीट आई. फिर उन्होंने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री. और नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिकली कहा कि नहीं, कि राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जो लोग ईमानदार सोशलिस्ट लीडर्स हैं. इससे अधिक और क्या चाहती हैं आप? He trusted him, he appreciated him, he publicly commended him. And you are giving this kind of reply? Therefore, we normally don't speak, but today in my press conference and on your channel today, I thought the country is required to be told all these flip-flops. कि नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं आप?
Finally, let me ask you, because this is the big mystery. RCP Singh coming into the union cabinet for all practical purposes was the breaking point. आज सुबह लल्लन सिंह जी ने भी कहा कि मोदी जी नहीं फैसला करेंगे कि हमारी पार्टी से कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा. You tried to damage him and he decided to fight for survival. Did Nitish ji agree to the cabinet position that you gave to his party member or not? आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार हैं. नरेंद्र मोदी जी अमित शाह क्या पहली बार कोalition का काम कर रहे थे क्या? 14 में भी किया था ना, पूरे अपने मेजॉरिटी के बावजूद. 19 में भी किया था. Mr. RCP has publicly stated that Nitish Kumar asked him to go and take oath, and he will make Lalan Singh as the national president. In the national executive meeting of JDU, the induction of Mr. Ramchandar Babu was appreciated. But let me ask a very, very fundamental question. अगर नीतीश कुमार जी को परेशानी थी तो 7 जुलाई को रामचंद्र बाबू बने थे ना कैबिनेट में, याद होगा आपको? वो कहते ना आप रिजाइन करो, बाहर आओ, मैं लाइक नहीं करता हूं तुमको, क्यों चले गए तुम? तो ये 1 साल 1 महीने के बाद ये कौन सा ज्ञान आ गया कि आरसीपी का प्रकरण शुरू हो गया? Padmaja, I am not going to comment upon the internal strife of JDU. There may be many. But come on, come with logic, which is palatable. All right. Mr. Ravi Shankar Prasad, thank you very much for speaking to us. These are going to be interesting times. Roughly 3 more years left of this government. The most interesting thing, though, will be the reaction of the people of Bihar, because this was one of the closest fought elections in recent memory. Thank you very much for joining us. I'm going to open this up. Let me take this across to Rakesh Sinha, Member of Parliament of the Rajya Sabha, Harshvardhan Tripathi, Senior Journalist, Abhishek Jha, Spokesperson JDU, Faiz Siddiqui, National Youth President and Spokesperson of the HAM Party, and Shubhran Shai, Leader of the Congress. Rakesh Sinha ji, I will try and get that answer from you. What really went wrong? Harshvardhan Tripathi, if you can answer that, what went wrong? Why did Nitish Kumar walk out? Was he feeling कि मुझे respect नहीं मिल रहा है इस alliance में, or was it ambition? मुझे लगता है कि पद्मजा ये दोनों चीजें थी, और जब मैं ये कह रहा हूं तो उसमें एक और बात शामिल कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जनता के मैंडेट और अपने कार्यकर्ताओं दोनों का अपमान किया था. 2015 में लालू जी और नीतीश जी मिलकर चुनाव लड़े. 2017 में नीतीश कुमार ने इसी तरह से लालू प्रसाद यादव की पार्टी को डंप कर दिया था. तो ये नीतीश कुमार का चरित्र है. वो मूलतः जेपी के 3 चेले हैं जिन्होंने बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी, और उसमें भाजपा के सुशील मोदी भी शामिल हैं. लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी. लेकिन अब का जो घटनाक्रम है, यहां नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा, उनका इररेलेवेंट होते जाना भारतीय राजनीति में, और बिहार में हर बीतते दिन के साथ उनकी पार्टी का लगभग खत्म होते जाना. तो अभी की अगर आप बात कहेंगे तो महत्वाकांक्षा के साथ साथ जो उनकी रेलिवेंसी खत्म हो रही थी, उसको फिर से अब वही राग अलापेंगे. फिर से वो कहेंगे कि हम सेक्युलरिज्म फोर्सेज के साथ खड़े होंगे. फिर से वो कहेंगे कि हम विपक्ष के कैंडिडेट होंगे. तो कुछ इस तरह की स्थितियां बनी जिसका नीतीश कुमार लाभ उठाना चाहते हैं. और महत्वाकांक्षा एंड इररेलेवेंस. लेट मी आस्क यू राकेश सिन्हा जी, क्या आज का जो डेवलपमेंट है आपके लिए ब्लेसिंग है या बून है या बेन है? You are asking me? Yes. You know, the political event which took place today is a daylight murder of political morality. Just 3 days ago, there was a vice presidential election. 2 days ago, vice presidential election, and JDU stood for the BJP's nominee. During the parliament session, JDU stood for the BJP. Now, what happened that Nitish Kumar has to take such a drastic action against the coalition politics? This shows that there was some kind of conspiracy against the coalition, and that conspiracy has become a deceit. Because you have abrupt decision. It is not abrupt. It is abrupt for the public. It is abrupt for the BJP. But for Nitish Kumar, he has been preparing for
such moment, and he has been in negotiation with Lalu Yadav's party. Here it is a wedding between the compulsions and the greed. The RJD require the power, and this is a compulsion of Nitish Kumar, because he is facing the internal contradiction inside his party. The man against whom he is speaking and making the reason for the split from the coalition politics is RCP, and RCP was a blue-eyed boy of Nitish Kumar. He promoted Nitish Kumar. So this is the internal bickering within the JDU, the factional fight within the JDU. So he is trying to mask himself from that point of view. What I want to say that, if you have some grievances, you have been historically with the BJP, except certain period of the time, when you were with the Lalu Yadav. In that historic period, we are fighting against the corruption, we are fighting against the Jungle Raj. You could have contacted the central leadership of the BJP. You could have presented your grievances. But nowhere BJP had given at any moment of coalition politics, any chance to Nitish Kumar that he could have complained. Where Prime Minister Modi ji has instructed and inspired the party workers to accept Nitish Kumar as the Chief Minister, because this is a coalition. So you're saying dharma. all of this BJP while always stands for the coalition dharma. But BJP... All of this while BJP, there was never any complaint from Nitish Kumar. BJP cannot manage your internal affairs. I think anybody has right for the political ambition in democracy. But political ambition should not breach the electoral capacity and the support-based ability. Here Nitish Kumar is breaching both. We know the electoral capacity of the Nitish Kumar ji and ability of his party to expand. The party is shrinking. The party is sinking. The shrinking and sinking party, a leader is thinking in terms of Prime Minister. Everybody has a right to think about becoming the Prime Minister. Okay. Anybody in the country who is a voter, he can think that he can become the Prime Minister. But the matter of fact is that Bihar is the sufferer. There is a question not only development. People are now afraid of the law and order situation. Okay. Abhishek Jha, answer this. The RJD and JDU. So just a second. Let me take this across to the JDU spokesperson. Abhishek Jha, your party's numbers are shrinking and sinking. Padmaja, I am adding one. Okay. Dr. Sinha, yes, please complete your point. Just one sentence, ask him to answer. You know the respective support base of both the parties. I don't have any acrimony for the support base. But the respective support base of both the parties have historically shown the disharmony for each other. So opportunistic alliance does not necessarily is going to be harmonized at the ground level. That is one of the contestation against the new alliance, new wedding between the compulsion and the greed. Okay, you will win a government, Abhishek Jha, but aren't you going to lose legitimacy? No, it's not like that. People of Bihar know there was a fish conspiracy in our party. Our party was backstabbed in the last 2020 General Assembly elections. There was a Chirag model, and through that Chirag model, people intentionally tried to damage our party. Specifically, candidates were given against our candidates in that Mr. Jha, election. since morning, this is the only logic I have heard. How are you waking up to a 2020 backstabbing in 2022? If somebody backstabs me right now, I react right now, not 2 years later. Stabbing is rather painful and violent. For proper analysis, time is required, and there was a second Chirag model inside our party, which was specifically planted so as to damage our party. And continuously, there were so many incidents. So you're saying it took you 2 years to analyze that the BJP is backstabbing you? When our leader came out of the governor's house after resigning from the post of Chief Minister of the NDA supported government, he mentioned that there are so many things, and our party's senior leaders will explain about it very well with proper facts and justifications and proofs that there are so many incidents in the last 2 years or even before that specifically and intentionally they tried to damage our party. And but in fact, going like that, on the contrary, let me remind you
that you had much less seats than the BJP. If you remember, when the results came out, at that time there were people within the BJP who said that we should stake claim to the CM's post. The Prime Minister came and said that Nitish Ji was our CM candidate and he will be our CM. How is that backstabbing? That, if anything, is staying true to your word. अगर उनको backstab करना होता, वो चुनाव में कहते कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, चुनाव के बाद कहते बाय. Mr. Jha. All right, Shubhranshu. Yes, Mr. Jha. I could not hear you. Just. How is it backstabbing when somebody stays good to their word? अगर उनको backstab करना होता, वो चुनाव से पहले कहते मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, चुनाव के बाद आपको बाय बाय बोल देते. In fact, the Prime Minister stepped in to say नहीं, यही मुख्यमंत्री बनेंगे. पद्मजा, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हर कोई ये कहता है कि हमारी सीटें कमाई से हमारी विश्वसनीयता या हमारे नेता की लोकप्रियता पर क्वेश्चन मार्क है, बट ऐसा नहीं है. षड्यंत्र के तहत हमारी सीटें कम करवाई गई. षड्यंत्र के तहत चिराग मॉडल को स्थापित किया गया एंड दैट वाज द रिजल्ट कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स उनके वोट कटवा होने की वजह से हारे. दिस डज नॉट मीन कि देयर इज क्वेश्चन मार्क ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द फेस ऑफ ऑनरेबल नीतीश कुमार जी. अगर ऐसा होता तो कोई भी अलायंस कभी भी उनके चेहरे पर नहीं जीता. पर सर, बैकस्टैबिंग की बात ही किधर है? 11 नवंबर, अगर आपको बैकस्टैब किया था, 11 नवंबर को नीतीश कुमार जी ने ये ट्वीट किया, जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को बहुमत प्रदान किया है. एनडीए को, खुद नीतीश जी ने बोला, एनडीए को, जेडीयू को नहीं, एनडीए को बहुमत प्रदान किया है. उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है. मैं पीएम नरेंद्र मोदी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं. आप बैकस्टैबिंग की बात कर रहे हैं, नीतीश जी तो धन्यवाद कर रहे थे मोदी जी का. समय लगता है, चीजों को फिगर आउट करने में समय लगता है, समझने में समय लगता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ होने का घूम कर रहा है. प्रोफेसर राकेश सिन्हा, समय लगा, 2 साल लगे, but JDU realized that they are being backstabbed and diminished. Professor Sinha. You know, BJP is not responsible for the decline of the Nitish Kumar and his party. It was the Samta party, which was a very small party, and BJP was largest party, and Samta party has grown at the cost of the BJP. But we never blamed Samta party for that. So I think he has joined with the RJD. I am telling you, Padmaja, interesting thing about the RJD. Any political party who joined hand with the RJD has suffered. Communist Party of India was a big force in Bihar. It has in 70s, 80s. When it joined hand with the RJD, it has become a very trivial force in Bihar. Take other party. Congress party joined hand with the RJD, and now you see the situation of the Congress party. It has become just a stepping in Bihar's politics. So RJD is very dangerous because it has capacity to create a caste polarization. It has developed the efficiency in creating a caste polarization, and its sole criteria for politics is a caste polarization. As far as Nitish Kumar is concerned, I think that he will not get other chance to repent and regret, because this is a very suicidal decision by him. The Bharatiya Janata Party and our Prime Minister Sri Narendra Modi ji have given the highest respect to Nitish Kumar ji, and he has shown the highest stage of opportunism in Indian politics. It was exceptional case. In Indian politics, it has been exceptional case when a party which has a lesser number of MLAs is getting the chief ministerial berth due to historical alliance, due to the story of historical alliance. We respected our legacy, but he had just stabbed the legacy, his own legacy, and he has the old legacy. That stabbing has emerged over the positive legacy. I think that this sufferer is Bihar. You know, during the Agni-Veer issue, we suspected Bihar government was silent when there was anarchy in the street. The attack on the government building, burning of the government building, these were done when the center alerted the state, then they became active. So I think that such situation in Bihar, which is mother of democracy, we must follow some democratic norms. Okay, serious charge that you are making there, Professor Sinha, almost insinuating that perhaps the JDU may have tacitly allowed the anti-Agniveer violence in Bihar. Let me take your point across to Shubhranshu Rai. You have acted in haste, you will repent in leisure. Nitish ji at least will. 2024 mein he may just have signed the death warrant of his party. Shubhranshu Rai.
देखिए पद्मजा, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता और खासकर रविशंकर प्रसाद जैसे लोग अगर ना मैंडेट और जनमत की बात करते हैं ना तो बड़ी हंसी आती है। मध्य प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को जनमत दिया था, लेकिन ये चोर डकैत भाजपाइयों ने रातों रात चोरी करके डकैती डाल के पैसे के बल पे खरीद के सत्ता अपना बनाया। मध्य प्रदेश से शुरू करिए और उत्तर पूर्व तक आप चले जाइए, आपको इनकी डकैती का इतिहास छोटा दिखने लगेगा, इनके कारनामे इतने बड़े हैं। नंबर 1 तो इनके मुंह से तो ये मैंडेट शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी डकैती करती है, वैसे इस बार आरजेडी ने डकैती की है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी डकैत है सब लोग। मैडम प्लीज 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 प्लीज, अब एक मैडम प्लीज, आपके ना आपके जो स्क्रीन के पीछे ये सब जो वर्ड लिखे आ रहे हैं मैं उस पर नहीं डिस्कस करना चाहता हूं, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है, 9 अगस्त। आज से ठीक 80 साल पहले ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस देश के लोग, शोषित लोग जो अंग्रेजों से तंग थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया था और गोरे अंग्रेजों को भगाया था। वो कहानी शुरू हुई थी महाराष्ट्र से। आज है 9 अगस्त 2022। उन गोरे अंग्रेजों के जो अनुयायी काले अंग्रेज हैं ना, इनको भगाने का कार्यक्रम बिहार से शुरू हुआ, क्योंकि अभी जुम्मा 1.5 महीने पहले जिन्होंने डकैती महाराष्ट्र में करी है। अब चोर और डकैत को यह पता होना चाहिए कि हर बार डकैती नहीं पास होती है। अभी आपको बीजेपी डकैत दिख रही है और नीतीश जी चाचा दिख रहे हैं। महंगाई, आपको शायद याद होगा कि 2020 में नीतीश कुमार को खुद तेजस्वी जी ने बोला था कि वो अब थक गए हैं। जी मुझे सब याद है, वो थक गए हैं। एक मिनट। एंड ये उन्होंने तब बोला था जब नीतीश जी ने ऐसा कमेंट किया था जो कि यूजुअली सिविलाइज सोसाइटी में नहीं किया जाता, कि जो लोग 8-9 बच्चे पैदा करते हैं उनको क्या ही पता कि सत्ता कैसे चलानी है। बट इस बात का जवाब दीजिए, एक सेकंड इस बात का जवाब दीजिए हर्षवर्धन जी, कि एक तरीके से दिस कैन बी सीन एज अ रिवेंज फॉर महाराष्ट्र। क्या आयरनी है, आज सुबह शिवसेना को खत्म करके ऑलमोस्ट एक सेना बीजेपी सरकार बनाई गई और यहां पे बीजेपी की सरकार नीतीश जी के साथ गिर गई। तो कई लोग कह रहे हैं पोएटिक जस्टिस है। देखिए पंजा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल अगर आज नैतिकता और शुचिता की बात करता है तो ये बड़ा शर्मनाक है। और कांग्रेस पार्टी हो सकता है खुश हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी वो जिसको कहते हैं कि कहीं थी नहीं, वो तीसरे नंबर की पार्टनर जरूर थी, कहीं थी नहीं। नाना पटोले बेचारे उनके अध्यक्ष थे, वो लगातार ये कहते रहे कि हमें कोई महत्व नहीं मिलता, हमारी कोई बात नहीं सुनता, लेकिन वहां सरकार गिर गई। शायद यही वजह है कि सोनिया गांधी जी ने, इसके बावजूद कि नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसके बावजूद उनको आज ये कहा कि ठीक है हम आपकी सरकार बनवाते हैं। लेकिन यहां दूसरा एक मसला है पद्मजा, बिहार की जनता के साथ ये जो धोखेबाजी हो रही है, पार्टियों के बीच की छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। उस नैतिकता, उस शुचिता का बात करने का अधिकार किसी राजनीतिक दल को नहीं है। अभी कितने दिन हुए हैं ये सब हुए, लेकिन बिहार की जनता के साथ ये धोखेबाजी जो हो रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए बिहार के हितों की बलि चढ़ा रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप बार बार ये कहेंगे, और मैंने पहले भी आपकी भी बहस में कहा है, दूसरी डिबेट में भी कहता हूं कि समय आ गया है कि राजनीतिक सुधार में एक बात तो तुरंत जोड़ी जाए कि अगर कोई गठजोड़ करके सत्ता में आता है और दोबारा पार्टी कहीं और जाती है तो उसके विधायकों को चुनाव लड़ना जरूरी हो जाए। इसके बिना सरकार नहीं बननी चाहिए, चाहे वो देश के जिस हिस्से में हो। इस राजनीतिक सुधार की तुरंत आवश्यकता है। और जो बिहार के लोगों के साथ यहां पर धोखा हुआ है अभिषेक झा, हाउ विल यू गो बैक टू द पीपल एंड आंसर दैट? नाउ लेट मी कोट टू यू, इन फैक्ट इन सितंबर 2020, ये आंकड़े मैं नहीं दे रही हूं, आप ही के नेता नीतीश जी ने दिए थे। उन्होंने एक कंपैरिजन किया, उनके ऊपर अटैक हो रहा था जॉब्स को लेकर के। उन्होंने एक फर्स्ट वर्चुअल रैली की थी इन द रन अप टू द असेंबली इलेक्शंस, और खुद उन्होंने कहा कि 15 साल का लालू प्रसाद का जंगल राज था, उस वक्त ओनली 95,734 जॉब्स वर ऑफर्ड इन द 15-year रूल ऑफ लालू प्रसाद एंड राबड़ी देवी। एज कंपेयर्ड टू दैट, माई गवर्नमेंट हैज गिवन जॉब्स टू 6 लाख पीपल। नीतीश कुमार ने खुद ये आंकड़े दिए कि हमने 6 लाख नौकरियां दी, लालू यादव और राबड़ी देवी महज 95,000 नौकरियां दे पाए 15 साल में। आज वो लोग ठीक हो गए, बीजेपी जंगल राज हो गई और तेजस्वी यादव एक्सेप्टेबल हो गए। आंकड़े तो सच बोलते हैं,
आंकड़े अगर दिए गए कि इतना काम किया गया 15 वर्षों में, तो यह तो सच है। और ये सच है, इस वजह से बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना मैंडेट उस गठबंधन को ही दिया है। तो जनता के पास जाने की चिंता हमें नहीं है। नहीं, तो गठबंधन तो एनडीए को मिला है ना। तो आप मान रहे हैं कि एक फेलियर पार्टी के साथ आप वापस गठबंधन करने जा रहे हैं, एक पार्टी जिसको आपने खुद ने कहा 15 साल उन्होंने बिहार को डुबो दिया अंधकार में, अब वापस उनके पास जाके चले गए आप। अभी का सिचुएशन ये है दैट नीतीश कुमार जी हैज सपोर्ट ऑफ अराउंड 165 MLAs, which clearly indicates that the majority is with him. That is, you're absolutely right. You have the numbers, but do you have the credibility? Do you have the credibility, and do you have the mandate? Nitish Kumar's face has that credibility, na? और ये proof fact है. Since you speak about his face having credibility, let me show you what he said in 2014, soon after he had parted ways with the BJP. उन्होंने कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, दोबारा बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा। और देखिए, within a few years he was back. You say his face has credibility. Let's play out Nitish Babu's own words and think about whether people see credibility in it. Listen. इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। संभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। राकेश सिन्हा जी, एटलीस्ट नीतीश कुमार हैज शोन कि असंभव कुछ भी नहीं है। उन्होंने असेंबली में बोला, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि असंभव है, पर उन्होंने पिछले 10 साल में दिखा दिया दैट इम्पॉसिबल इज नथिंग। You know, the index of unlearning and forgetfulness is very high in Nitish Kumar's life. He takes vows, he declares something, and tomorrow he reverses that. I think he is one of those politicians whom I consider that who has some understanding of Indian politics and liberal democracy, but he is doing reversal of the liberal democracy. He is taking advantage of the party which has given all kind of respect and shelter to Nitish Kumar. I say it was a shelter to Nitish Kumar. He has been largely increasingly becoming the marginal force in Bihar's politics, but high ambition of becoming prime minister. He failed to manage his own political party. You know, when George Fernandez was marginalized and insulted, everybody felt sad. Because George Fernandez was not a common leader. He was one of the person who led the historic railway strike against Indira Gandhi's totalitarian regime and anti-people regime. He was one of the person who led the fight during the emergency. BJP has always respected George Fernandez, despite political differences. And George Fernandez reciprocated it. So I think that such kind of lessons people of Bihar have to learn. Bihar is one of the states where Madhulime from Mumbai got elected in Banka seat, Lok Sabha. J.B. Kripalani from Sindh got elected from Munger state. George Fernandez from Karnataka got elected from Muzaffarpur. Ashok Mehta from Gujarat got elected from Muzaffarpur. So this kind of spectrum, Bihar's politics and democracy, we think now Bihar has to rise above the caste line, communal line. And one last question: 700 schools are mandatory on Friday leave. There is one constitution, liberal democracy. We are run by the constitution. There is a constitutional government and society. And here certain schools are giving leave on a particular day, government schools. Whose mandate is that? Okay. If every religion would start dictating and deciding its own vacations on the basis of the religion, the country cannot be run on the secular democratic line. Well, now you're going to be in the opposition, Professor Sinha. Maybe that is a good opportunity, a blessing in disguise for you to be raising all of these issues, because that rule, as a matter of fact, has been in practice for a very long time. A savvy, dyed-in-wool, hardcore politician, yet taking a decision which has left many wondering why.
Thanks very much, gentlemen, for having joined us. Full day tomorrow beginning in the morning, the swearing in of the new Nitish Tejaswi cabinet. Stay tuned to Times Now.